a country that was known for harmony, for compassion, and for humility, we see a country which is full of hatred, anger, and arrogance. Hatred is not the nature of the Indian people. आरएसएस और बीजेपी नफरत, हिंसा और डर फैला रहे हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है और नफरत की राजनीति करते हैं। भय पैदा करो, लोकतंत्र को खत्म करो और चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाओ। We will not allow the BJP and the RSS to divide India and to spread hatred in this country. BJP should explain to small and medium businesses why they did demonetization, why they have a fraud GST. They should explain to the people why for the first time in Indian history farmers are having to pay GST. They should also explain why we have the highest prices we have ever had. Why a gas cylinder that used to cost 400 rupees now costs 1000 rupees. Why petrol and diesel have become as expensive as gas. These are the issues that the Bharat Jodo Yatra is raising. We have the highest rate of unemployment we have had in 70 years. हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चों को रोजगार मिले। हिंदुस्तान का युवा रोजगार चाहता है। छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देश को रोजगार देते हैं। और प्रधानमंत्री ने मन बता दिया है कि हिंदुस्तान का जो छोटा व्यापारी है, उनकी दुकानें, उनके बिजनेस बंद करने हैं और इनके बजाय 2-3 अरबपति लाखों दुकानें लगाए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। जिसको पब्लिक सेक्टर कहते थे, BHEL, HAL, भारत पेट्रोलियम, सबसे बड़ा रेलवे, वो भी रास्ता बंद कर रहे हैं। This yatra is about unemployment and asking the question to the BJP why we are facing the highest unemployment levels we have ever faced.